Good afternoon, everyone. Today we have gathered here for Gujarat State Knowledge Session. आज के सेशन का थीम है गुजरात पैलेट ऑफ न्यूट्रिशन अ रेसिपी फॉर विकसित भारत एट 2047. I would like to extend a warm welcome to all the dignitaries, esteemed guests, our engaged audience members to celebrate Gujarat's progress. I would now like to invite Shri D.H. Shah, IAS Managing Director, GICL and Index Day, for a welcome address, sir. Namaskar. Very good afternoon to one and all present here. Ladies and gentlemen, I am privileged to welcome you all on this global event to discuss the vibrant and dynamic agriculture scenario of Gujarat, a state that has consistently been an innovator in India's agriculture development. Talking about Gujarat agriculture sector, it is also characterized by its diversification and value addition. The food processing industries in Gujarat has become a significant growth driver, adding value to agriculture produce and creating a lot of job opportunities, also enhancing the farmers' income. As our Honorable Prime Ministers always say that doubling the farmers' income is crucial for nation's development. Moving further, due to Gujarat's strategic location, well-developed infrastructure, and ease of doing business, the state has become a paradise for investors. I would also like to share that under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Bhupendrabhai Patel, the Gujarat government has taken various initiatives to promote food processing sector in Gujarat. We have a dedicated Agri Extension Bureau Indexed A in order to give special focus to agri and food processing sector. Ladies and gentlemen, also the advanced technologies in food processing are transforming the industries by improving efficiency, quality, and safety while waste and environmental impact. I would also like to say that due to increased urbanization, especially in metro cities, where most of the adults are working and have a less time to cook, as a result, they tend to rely on processed food, leading to a growing demand. Most importantly, with more than 60% of rural population involved in agriculture in the state, there is a tremendous opportunity to engage the next generation of rural farming youth into agripreneurship. With this background, I would like to welcome you all to this interesting session on the theme Gujarat's Pellets of Nutrition, a recipe for Viksit Bharat 2047. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to our esteemed guests gracing us with their presence on the stage for the today's program. Now it's time to welcome today's Honorable Chief Guest, Sri Raghavjibhai Patel, Minister of Agriculture, Government of Gujarat. He is not only dedicated representative, but also a farmer and deeply connected to Gujarat's agriculture. He is a guiding light for all of us in the department. We heartily welcome you, sir. Also, I am honored to welcome Dr. Anju Sharma ma'am, Additional Chief Secretary of Agriculture Department, Government of Gujarat. She has more than 30 years of administrative experience and has been associated with various departments of Government of Gujarat. It is great to see young people getting involved in agriculture. Madam has been
a big help in creating a startup ecosystem in Gujarat with the student startup and innovation policy. I am sure that with her guidance, we can build a strong agri-entrepreneurships and startup ecosystem in Gujarat. It is an honor to have her here with us today. I am delighted to welcome you, ma'am. Thank you. Now, I would like to welcome Dr. Neeru Bhooshan, Assistant Director General, Intellectual Property and Technology Management, ICAR. She has been instrumental in IP management, technology transfer, and commercialization. Ladies and gentlemen, please join me. Welcome Dr. Neeru Bhooshan. And today, she will be going to speak on the topic shifting paradigm and embracing possibilities with innovative value chain interventions. Now it's time for me to welcome Professor Sri Palanimuthu, Director NIFTEM, Thanjavur. He has over 29 years of rich experience in research, teaching, extension, and management. He is a famous scientist, instrumental in establishment of Center of Excellence for processing and value addition of small millets at University of Agriculture and Science, Bengaluru. It is a privilege for me to welcome you, sir. And today he will be going to take session on the topic disruptive food technologies, the next big leap in food processing. Further, moving on, now I would like to welcome Sri Vipul Mittal, Managing Director at National Cooperative Organic Limited. He has more than 25 years of experience in strategy and implementation like launch strategy to execution in leading FMCG organization. I am grateful to welcome you, sir. As you all know that natural farming is one of the most essential topic nowadays, and today he is going to enlighten us on the topic, the building high quality global supply chain for natural farming products. I also welcome my team of Agriculture Department. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite each one of you to join us in the journey of discovery and growth. Let us exchange ideas, challenge assumptions, and commit to action that will lead us to a brighter future for agriculture and food processing. With that, now I would extend my deepest gratitude for your presence and participations. Together, we have the power to shape an industries that as resilient, as dynamic, as nurturing, as innovative. Let us embrace this opportunity with determination. Thank you, and I look forward to fruitful discussion at the Gujarat's Palace of Nutrition, a recipe for Viksit Bharat 2047. It envisions a future of healthy and living through nutritious crops and enriched food processing, promoting a healthy life for all. I wish you all good luck. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir, for kind words and an insightful narration on Gujarat. I would now request Honorable Minister, Sir, Shri Raghavji Patel, to felicitate Dr. Neeru Bhooshan with a memento on behalf of Government of Gujarat. Thank you, sir. I would request Honorable Minister, sir, to felicitate Professor V. Palanimuthu, sir, with a memento on behalf of Government of Gujarat.
Thank you, sir. Thank you, everyone. It's a complete privilege and honor. What we would like to now showcase is a short film showcasing Gujarat's progress in agro and food processing sector. Video, please. Vision of Viksit Bharat 2047. And among the front-runner states driving the growth forward is Gujarat. An unprecedented growth has been ushered in agro and food processing sector. Today, Gujarat, the growth engine of India, accounts for 30% of the agro and processed food exports of India. एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधिक है। आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। Under the able leadership of Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Gujarat is opening doors to the world. Come, invest in the agro and food processing sector of Gujarat, a growing powerhouse. In last 2 decades, Gujarat's agro sector has witnessed profound transformation. This transformative journey has witnessed an average annual growth of 123% in horticulture production over the past 15 years. Divided in 8 agroclimatic zones, Gujarat takes pride in being a leading producer of many diverse crops in India, thus offering a basket of opportunities to investors. The 1,600-kilometer long coast belt is significant to Gujarat's blue economy, contributing 19% of the marine production of the country and advancing brackish water aquaculture farming. With over 10 million milch animals, Gujarat contributes to over 8% share to India's milk production. Led by the cooperative dairy movement, the state has covered a path of efficient milk accessibility chain and value-added products nationally and globally. Gujarat has embraced the resurgence of millets and natural farming practices. Value addition to these produce has a huge potential waiting to be unleashed. A strategically planned ecosystem accentuates Gujarat's strengths for agro and food processing sectors. A robust network of air, rail, road, and ports makes Gujarat a well-knit hub for agricultural enterprises. 38% of Delhi-Mumbai Industrial Corridor, that is DMIC, passing through the state, augments its logistics strengths, further making it a global gateway. Gujarat extends warm invitation to investors to be part of its growth trajectory in the agro and food processing sector. This sector has been designated as thrust sector under the Atmanirbhar Gujarat schemes, wherein investors are greeted with a myriad of incentives. Government of India offers a gamut of incentives as well. In order to handhold the investors in this sector, Gujarat has recently set up Index A, dedicated to foster investments in agribusiness sector of Gujarat. Index A welcomes you to invest in the ecosystem of policy-driven governance, state-of-the-art infrastructure and enterprising farmers. Come, reap the benefits of agro-industrial growth in the fertile land of Gujarat. Come, invest in the agro and food processing sector of Gujarat, a growing powerhouse. After that video, it's only apt to now invite Dr. Anju Sharma, IAS Additional Chief Secretary, Agriculture, Farmer Welfare and Cooperation Department for keynote address, please, ma'am. Honorable Minister of Agriculture in Gujarat, Shri Raghavji Bhai, honorable dignitaries on the stage, off the stage, ladies and gentlemen. Today we are all witnessing a new era in the agri-processing industry,
where innovation, sustainability, and technology, they converge to redefine what we eat and how we produce it. Known for its diverse culinary heritage, entrepreneurial spirit, and commitment to progress, the vibrant state of Gujarat stands tall with giant agriculture and food processing sector. As you all may be aware, agriculture sector contributes significantly to the state's economy with a gross value added share of 15.9% in 2022-23. Notably, the CAGR for Gujarat's agriculture and allied sectors at 9.7% surpasses a national average of 5.7% between 2011 to 2021, which clearly goes to show that the agriculture is considered as a priority sector, in a very, very high priority sector in Gujarat. And under the visionary leadership of Honorable PM Shri Narendra Modi ji, Gujarat government had taken on its own to grow at a very fast pace in the agriculture sector, and that trend is continuing, and our agriculture sector is growing at a faster pace than the rest of the nation. But come with that, more than 40% of Gujarat's population is directly or indirectly dependent on agriculture for their livelihood. And few years, our total vegetable production is 167.18, that is 1,67 lakh metric ton. And we are the third largest producer of spices in the country. And our spices production is 12.01 lakh metric ton. We have a huge focus on millet, which we call Shri Ann, which basically all of you are aware of the health benefits, as well as the fact that most of the millet crops are climate resilient and they are also full of nutrients. And they have a lot of other health benefits as well. The export of millets from Gujarat has increased by 44% from almost 44% between 2019 to 2023. And we are the top exporter with 16.37% share in the agriculture and processed food products export. Major exports are rice, oilseeds, spices, fruits, vegetables, cereals, and pulses. Exports of fruit and fruit value-added products has increased by 55% from Gujarat. And as you're all aware, that we rank 4th in the national share of milk production, which stands at 7.5%. We have a very robust and very elaborate network of milk cooperative societies in the state, and with, of course, Amul and the National Dairy Federation being there in Anand in Gujarat. And we are witnessing remarkable advancements in food technology now, biotechnology, artificial intelligence, application of emerging technologies to agriculture sector across the value chain. And we have invested a lot into that with our policies, emphasizing and incentivizing the sector. And we have more than 1,000 cold storages with almost 40 lakh metric ton cold storage capacity, and 6 centers of excellence for fruits and vegetables. We have 5 agriculture universities and one of India's only and the first natural farming university in Gujarat. And we have 29 incubation centers in collaboration with industries to work on innovative products, on food preservation techniques. And we have an onion dehydration processing cluster at Bhavnagar. And a lot of innovation is taking place by our entrepreneurs, by our FPOs, and by the industry to provide a boost to the agriculture value addition sector. We have a large network of MSMEs in the food processing sector, and we have more than 39,000 MSMEs in the sector. And
these provide employment to a large number of people, along with the significant contribution to the state's economy. We are welcoming entrepreneurs for investing in value addition products, because any value that is added to the food, it leads to encouraging the farmer and seeing to it that farmer gets a better price, and it increases the remunerativeness of the farming. And we are focusing on remunerative farming, focusing on the fact that farming should be remunerative enough for the farmers to stay in the farming, I won't call it business, farm sector. And also adding value so that more and more innovative enterprises and the youth, they find their entrepreneurship spirit, finding a place in the agriculture sector and utilizing their energy. We are trying to energize by converting and by our youth into agripreneurs and diverting them into the agri and the food processing sector. We have 2 mega food parks at Surat and Mehsana, and we are now looking at putting up more plug-and-play food parks. We are here to collaborate with the industry, with the technologies across the world and across India, and also provide a platform for our entrepreneurs for investing in value addition products and in generally adding value to the farmer's produce, so that we can meet the aspirations of not only the youth but the entrepreneurs as well as the farmers. As we navigate through the challenges of the 21st century, we know that climate change, population growth, resource scarcity, and of course the quality of the food products is very important, and we are focusing a lot on that. We are committed to promoting sustainable agriculture practices, and you'll be rather be proud to inform that more than 7 lakh farmers have already adopted natural farming as the farming practice of their choice, and more than 10 lakh are receiving training in natural farming. So that by the end of this year, and as the years pass by, we have more and more, and we are looking at about 20%, at least 20% of our farmers getting into natural farming by 2030, and promote natural farming in a big way so that more healthy and clean produce is available to the consumers. As you all are aware, sustainability is a key theme of this event, and we from our side are trying to minimize environmental impact, reduce energy consumptions, and conserve water. And I'm here very proudly saying that in the last year, the agriculture year, we have reduced our fertilizer consumption by more than 1.5 lakh metric tons, and chemical fertilizer consumption, which has not only resulted in reducing the climate footprint, the carbon footprint, but also the a great savings to the national, to the nation. One of the districts, Dang, that is a tribal district. It has been declared as 100% natural farming district, and we have trained farmers in a big way in Dang, and the state also boasts of about 1 lakh hectare
in certified organic farming. And Dang district is promoting through products into both natural and organic farming. And while for those who may not know what and who may not have much study into natural farming is more of a process, and the yield is, of course, organic out of that. And organic farming can also be organic can be done through both natural farming methods and other conventional farming methods. Natural farming method focuses on the cow dung and urine of the indigenous cow breeds to nurture the soil and to provide nutrients to the plants, and also uses very, very natural products to take care of the to take care of the pests and insects that invade the plants. So we've also seen that crops grown through natural farming methods, they have higher levels of nutrients, including antioxidants, vitamins, minerals, and a very important thing is that natural farming methods, they protect the soil from deterioration. In fact, for the farmers, those farmers who have practiced natural farming, they have witnessed that the soil gets improved and its yield increases when we practice natural farming. Unlike the conventional methods, when we use the chemicals, the soil suffers. Through the natural farming methods, the soil gets nourished and enriched in the farming process. So today we are here discussing the Gujarat's palette of nutrition and the various aspects dealing with it. And I'm confident that the discussions and exchanges that take place during this event will inspire action and lead to tangible outcomes. Also, I'm sure that many of you would have visited our stall, where we have brought in our FPOs and our startups who are showcasing their innovative products. And some of them have really come up with very high value-added, very nutritious products out of millets and out of various fruits, vegetables, and things. So you can experience all that, and you can look for industry collaborations. And we can shape a future where the entire food sector, the entire, I won't say only the food processing, but the entire agri and food sector is a beacon of innovation, sustainability, and collaboration. And our farmers, our agro-processing industry, our innovators, entrepreneurs they welcome collaborations with you, and I'm sure it would be a great experience for you to invest, to work in Gujarat, and to be a part of our growth journey. Thank you for your commitment to the cause, and I look forward to productive dialogues. Thank you very much for a very patient hearing. Thank you very much, ma'am, for such an insightful narration and kind words. I now request our today's chief guest, Honorable Minister Shri Raghavji Patel, for his address and shedding light on Gujarat's agriculture prowess. So. इस सेमिनार में उपस्थित डॉक्टर अंजू शर्मा मैडम जी, हमारे गुजरात के अधिक मुख्य सचिव श्री कृषि, फार्मर एंड सहकार विभाग, श्री DS शाह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, डॉक्टर नीजू भूषण जी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ICAR, डॉक्टर V पलानीमुथु, डायरेक्टर NIFTEM थांजावुर, श्री जयंत मेहता जी, MD श्री GCM F आणंद,
प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ जुड़े हुए सभी उद्योगकारों, एफपीओ, सभी भाई और बहनों, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में विकास की जो अविरत यात्रा शुरू की है, उसी विकास यात्रा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल मक्कमता से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह परिणाम है कि गुजरात आज विकास की बुलंदियों को छू रहा है। आइए इस विकास गाथा में अपना नाम जोड़कर सफलता की इस मजबूत इमारत का हिस्सा बने। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य उद्योग और कृषि दोनों के विकास के साथ देश के विकास में भागीदार बन रहा है। राज्य में प्राकृतिक पर्यावरण की विविधता के कारण 35 से 40 विभिन्न प्रकार के अनाज, तिलहन, दलहन, मसाले, फल और सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के कारण गुजरात राज्य कृषि उद्योग की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थल है। कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों और सहायता योजनाओं के कारण गुजरात राज्य देश में कृषि और कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में सोइल हेल्थ कार्ड, कृषि महोत्सव, जल संचय के उपाय, माइक्रो इरिगेशन जैसे क्रांतिकारी उपायों की शुरुआत की थी। गुजरात राज्य के कृषि क्षेत्र में कुछ फसलों में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रमुख स्थान रखता है, जिसमें गुजरात राज्य में उगाई जाने वाली कपास, एरंडा, मूंगफली, जीरा और इसबगुल जैसी फसलें मुख्य है। राष्ट्रीय स्तर पर बागबानी फसलों के उत्पादन में गुजरात 5वें स्थान पर है। गुजरात राज्य में गिर, केसर, आम, कच्ची खारेक और भालिया गेहूं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और भी इस फसलों की जीआई टैगिंग के लिए गुजरात राज्य प्रतिबद्ध है। वाइब्रेंट गुजरात और राज्य में उद्योग के लिए खुली नीतियों के कारण राज्य में कई सारे उद्योग स्थापित हुए हैं, जो राज्य में कृषि और कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के लिए बहुत अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। गुजरात को साल 22-23 में कृषि संरचना निधि के अंतर्गत 5वें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य का पुरस्कार मिला है, जो भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। भारत साल 24-25 में बजट के एमएसएमई क्षेत्र में ई-रेडिएशन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है और साथ ही एनएबीएल मान्यता प्राप्त 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुविधा प्रदान करने की भी योजना है, जिसमें गुजरात की फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को लाभ मिलेगा। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ड्रोन प्रोत्साहन और उपयोग नीति की घोषणा की है, जिनमें कीटनाशकों और उर्वरक के छिड़काव, बीज बुआई, मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी के और खेतों का सर्वेक्षण जैसे विभिन्न कार्यों के लिए युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर प्रदान करता है। गुजरात की सर्वग्राही कृषि व्यवसाय नीति के तहत 2000 से अधिक लाभार्थियों ने कृषि प्रोसेसिंग एकमों की स्थापना की है। साल 2024-25 में गुजरात राज्य ने बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 22,000 करोड़ रुपए की विशाल राशि का प्रावधान किया है, जिसमें किसानों को बिजली की सब्सिडी के तहत रुपया 12,000 करोड़ का प्रावधान किया है। कृषि और संलग्न गतिविधियों में
किसानों को ऋण ब्याज सहाय के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गुजरात के पास कृषि उत्पाद के विक्रय का एक मजबूत नेटवर्क है। राज्य में 224 कृषि उत्पादक मार्केट समितियों है, जिसमें 144 ई नाम से जुड़े हुए 355 एफपीओ स्थापित किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होगा, किसानों को उत्पादक के अच्छे दाम मिलेंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बागवानी की फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन के लिए गुजरात में बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट और राइपनिंग चैम्बर जैसी इकाइयाँ स्थापित की गई है। सूरत और महसाणा में 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं और नए 5 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने का आयोजन है, जो राज्य में निवेश और उद्योगों को आकर्षित करेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए राज्य में विविध योजनाएं लागू की जा रही है, जो उद्योगपतियों और निर्यातकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आयकर में भी छूट दी है और 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया में को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, गुजरात तक निवेशक सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध भूमि की कीमतों का पता लगाने के लिए राज्य औद्योगिक भूमि बैंक की स्थापना की गई है। राज्य में कृषि और खाद्य संस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने इंडेक्स ए नामक एक एग्री बिजनेस एक्सटेंशन ब्यूरो स्थापित किया है। अमूल, वाडीलाल, रसना, मैकेन्स, फ्लोरिस, बालाजी जैसी कंपनियां गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही है। कृषि रसायन के अविवेकपूर्ण और अत्यधिक के कारण हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। गुजरात राज्य दुनिया का एक ऐसा राज्य है जिसने पहला प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया है। डांग जिले को राज्य में रसायन मुक्त कृषि करने वाला जिला घोषित किया गया है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण पिछले 4 सालों में 8 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक कृषि को अपनाया है। ऐसे में प्राकृतिक खेत उत्पादनों और उसके प्रसंस्करण को देश और दुनिया में जगह दिलाने का सुनहरा अवसर है। भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और प्रयासों के कारण गुजरात राज्य विश्व मांग के अनुसार विभिन्न उत्पादकों का प्रसंस्करण करने और उन्हें विश्व मंच पर उपलब्ध कराने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इस मौके पर सभी उद्योगपतियों को मैं गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में और अधिक निवेश करने और गुजरात के विकास में सहभागी होने के लिए गुजरात सरकार की ओर से आमंत्रित करता हूं। आइए हम सभी मिलकर भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने के लिए प्रयास करें। माननीय वड़ा प्रधान श्री ने जो सपना देखा है कि विश्व के सभी देशों के लोगों के डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय व्यंजन होना चाहिए, उसको हम सब साथ मिलकर साकार करें। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आपने प्रेरणादायक और मार्गदर्शन वक्तव्य के द्वारा गुजरात के एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में हमें बताया। Before we begin the technical talks, I would now like to invite our esteemed dignitaries to please have a seat
so that they can enjoy the session from the dais. I would now request Dr. Neeru Bhooshan, Assistant Director General, ICAR, to shed light through her expertise on shifting paradigms and embracing possibilities with innovative value chain interventions. Ma'am, please. सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें? हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि टेक्निकल टर्म्स का उतना डिफ़िकल्ट हिंदी नहीं मैं बोल पाऊँगी, बट मुझे लगा कि आपसे भाषा तो एक माध्यम है, तो किसी में भी बात की जा सकती है। तो dignitaries on the dais and off the dais, first of all, my thanks to the organizer for inviting me. I'll be sharing, मैं एग्रीकल्चर का प्रीव्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें 17.6% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 11% लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन को केवल 4% दो वाटर के साथ और 2.4% वर्ल्ड एरिया के साथ फीड करना है। और हमारा चैलेंज ये भी है कि 47% लोग एग्रीकल्चर पर आधारित हैं। तो एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की इकॉनमी की बैकबोन है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक चैलेंज भी है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर 24.1 बिलियन की प्रोजेक्टेड मार्केट साइज़ है, जो 25 तक हमने प्रोजेक्ट किया था। और इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। और अगर आप देखें तो मैंने इसको सेगमेंट किया है सभी सेक्टर्स में, और मैं इन टोटलिटी की बात कर रही हूँ। तो इनोवेशन का स्पेस बहुत ज़्यादा होगा अगर हम प्रोजेक्टेड मार्केट साइज़ की बात करें। और जब हम, मैडम भी गुजरात का एक थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और इंडिया का भी हम सभी जानते हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और DPIIT में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो उसका स्कोर 1 लाख से ज़्यादा है, और अनरजिस्टर्ड इससे भी ज़्यादा होंगे। तो एक बहुत बड़ा मास हमारे पास है। मैं थोड़ा सा एग्री स्टार्टअप का देना चाहूँगी, क्योंकि मैं एग्री स्टार्टअप में भी मुझे जिम्मेवारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। तो इसमें कि चूँकि हम एनालिसिस करते हैं, तो ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो 29 साल से कम उम्र के लोग हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और जिनका 5 से 7 साल एक्सपीरियंस है। और आपको हैरानी होगी कि 82% ऑफ द फाउंडर्स आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो जो हम लोग मिनिस्ट्री में बात करते थे कि अट्रैक्टिंग द यूथ इन एग्रीकल्चर इज़ ए चैलेंज, सो दिस इज़ द आंसर कि इट्स नॉट ए चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स वाई वी से that agri sector with the thriving startup ecosystem हम रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, मैं पैराडाइम रिवर्सल की बात करती हूँ कि हम पैराडाइम रिवर्सल करने की ताकत रखते हैं अगर हम इन सब चीज़ों को प्लेस करते हैं। अब हम वैल्यू चेन पे आते हैं। आज जो हम पैराडाइम शिफ्ट अनुभव कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने ऊपर वैल्यू चेन को दिखाने की कोशिश की है। प्री प्रोडक्शन मतलब सारे ऑपरेशंस हैं एग्रीकल्चर के, फ्रॉम फार्म टू फोक। अगर हम चलते हैं तो हर ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करना, इनोवेट करना, उसकी सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव करना, उसकी कॉस्ट कटिंग करना एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं वैल्यू चेन में, क्योंकि वैल्यू चेन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लॉजिस्टिक्स भी है और पॉलिसीज़ भी है। तो लेकिन मैं बीच के सेक्टर को ही कैटर करूँगी, मैं उन चीज़ों को नहीं टच करूँगी क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ पे अपनी बात को फोकस करूँगी। तो हमें एंड टू एंड ऑपरेशंस में एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना, ताकि फार्म टू फोक के हर ऑपरेशन में एक एफिशिएंसी की बात है, एक इनोवेशन एम्ब्रेसमेंट की बात है। तो वो कैसे हो रहा है, मैं इस पे अपना टॉक फोकस करूँगी।
सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि अडॉप्शन एट द फार्मर्स लेवल, टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस एट द फार्मर्स लेवल. सो इट्स रियली वेरी हार्टनिंग टू सी द इनोवेशंस एट फार्मर्स लेवल. तो जैसे कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन भी है और एम भी है कि टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर contribution in the economy as well as to make India a key player in the global value chain landscape. So उसी मिशन के अंतर्गत जो हमारा मैकेनाइजेशन की बात है, हम मैकेनाइजेशन हैंडलिंग इन प्रोड्यूस है, या सबसे पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप बेस्ड मल्टी फंक्शनल मशीन्स, क्योंकि हम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में काम करते हैं और हमारे पास 8 तरीके की सॉइल टाइप्स हैं और क्रॉप वैरायटी, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान एक बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, तो इसलिए हमारे पास क्रॉप की डाइवर्सिटी बहुत है, क्लाइमेट की डाइवर्सिटी बहुत है. तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और ये हमारे लिए चैलेंज भी पोज करती है. अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हमने इसको हार्नेस कर लिया तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इसको हार्नेस नहीं कर पाए तो ये डिज़ास्टर है. तो सबसे पहले क्योंकि क्रॉप की डाइवर्सिटी बहुत है और क्रॉप के हर ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हमें मल्टी फंक्शनल मशीन्स की ज़रूरत है. तो इट्स रियली वेरी good to see the development of the small scale machines and their adoption at the farmers level, especially ये पोटैटो हार्वेस्टर है, इसके साथ ये सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग है, इसके साथ ही ये पैकेजिंग है और ये जस्ट 2 लाख रुपए की मशीन है. तो इसी तरीके से एक 40,000 रुपये में बीच में जो सबसे है ये वेजिटेबल सोइंग की मशीन्स हैं. वेजिटेबल के बीज की नर्सरी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये एक ट्रे बेस्ड है तो जिसमें हम करते हैं. तो इसी तरीके से आई कुड सी नंबर ऑफ मशीन्स फॉर नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर मल्टीपल फंक्शंस. दिस इज़ वन वे दैट द इनोवेशंस एट द फार्मर्स लेवल. द अदर वे इज़ कस्टम हायरिंग सेंटर. जब हमारे पास मशीन्स हैं और हर फार्मर की इतनी मतलब हैसियत नहीं है कि वो हर मशीन को ले सके, तो उसमें पे पर यूज़ is the model that is coming up, and some of the startups are providing this kind of services, and the custom hiring center is also providing this kind of services where the farmers is in a position to access the latest machinery but in a pay per use model so that they can save their capital cost as well as getting the professional services. So by utilizing it in a better way, their produce can be increased as well as the market intelligence, which is again the information technology. आपको सबको पता है कि डिजिटल हमारे यहाँ काफ़ी अडॉप्शन है, तो उसका भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. तीसरी चीज़ डिजिटल इंटीग्रेशन. दिस इज़ रियली रियली वेरी वेरी रिक्वायर्ड. जहाँ पर मैं स्टार्टअप की बात कर रही थी, जो 82% के लोग हैं वो IIT के ग्रेजुएट हैं और दे आर रियली वेरी गुड इन देयर टेक्नोलॉजीज. दैट्स हाउ with the help of the incubation or the ICAR or the research institution or SAUs, we are using their skills. I'm saying कि we are using their skills because they do not know what is agriculture, but they know how to build it. पर एग्रीकल्चर में फोर्स कैसे लगेगा, मशीन कैसे यूज़ होगी, फार्मर के लेवल पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी ट्विकिंग, इसका अडॉप्शन इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द incubation centers, and that's why the ecosystem plays a very very important role. But यहाँ पर हम दूसरा डाटा, एग्रीकल्चर में डाटा किसी भी चीज़ में, बट एग्रीकल्चर का डाटा कैसे लेना है. AI/ML की हम बात करते हैं, बट डाटा क्या होगा, कैसे लेंगे. सो ये नॉलेज हम इम्पार्ट करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है. बट जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस एनालिटिक्स की बात करते हैं तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप की यील्ड एनहांसमेंट और उसकी कॉस्ट कटिंग, इनपुट रिडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी पे बहुत एप्लीकेबल है. आई हैव सीन कपल ऑफ स्टार्टअप्स वर्किंग इन दिस एरिया, एंड पहले हमें भी ये लगता था पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने एरिया में करेगा, स्केल एक बहुत बड़ी बात है. लेकिन आफ्टर 3-4 years रियली दे आर डूइंग ग्रेट एंड दे आर अचीविंग द स्केल्स ऑल्सो. बट
the government policies and the academia support they always need. Adoption में initial adoption के अंदर उनको support चाहिए, जो इंक्यूबेशन सेंटर भी देते हैं और पॉलिसी जो कंजीनियल एटमॉस्फेयर है वो भी देता है, बट इससे ज़्यादा उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. बट दीज आर सम सर्टेन टेक्नोलॉजीज विच विल बी रियली वेरी हेल्पफुल एंड वो शिफ्टिंग पैराडाइम शिफ्ट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे. दूसरी बात, हमने कोरोना की बात करें तो कोरोना उस टाइम पे आया था जब फसल तैयार थी कटने के लिए, और लॉकडाउन का पीरियड था, तो सभी मतलब बीइंग इन एग्रीकल्चर, सो special permissions has been given. I'm sure madam must have handled those operations. So e-mandis were being made overnight. So that's how the e-commerce played a very important role. And at this level also, हमें पता है कि एग्री इनपुट जो हमारा डीलर होता है उसी से हमारी जिस कंपनी का उसके पास होता है उसी की बात करता है और उसी को बेचता है. कौन हमारी क्रॉप के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, इसके लिए हम बात नहीं करते हैं. दूसरी बात एक और भी है, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर हाइपर लोकल है और हमें हाइपर लोकल सॉल्यूशंस की ही ज़रूरत है. तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे हाइपर लोकल सॉल्यूशंस को कैटर करते हैं. तो बेटर एग्री इनपुट एडवाइजरी and better delivery at a right time, at a right place, in a right quantity, at a right price. So that's how this is very important. At the same time, they take their output also. So this is another disruption when we talk about the input and output agriculture produce. Yeah. So आज की डेट में food कैसे it's a major shift कि how the food is being produced, processed and sold. Youngsters has placed their conscious choice for wellness and healthy products. So they are demanding the healthy product and how it is being processed and how it is being produced. They want to know it. The traceability and blockchain solutions are playing a very important role in this. And that's why the food bazaars are flooded with the wellness and functional foods. So this is really a change. So this is a welcome change too, because health में जितना अच्छा खाएंगे उतनी अच्छी health होगी, तो उतना हमारा medicine का bill कम होगा, उतना कम हम बीमार होंगे. So this is a major change that is going on. ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे से इनोवेशन से कितना प्राइस पे फ़र्क पड़ता है. इस लड़के ने केवल गुड़ को, जैगरी को सैशे में दे दिया, जो हम अपने टिफ़िन बॉक्स में कहीं भी, जैसे पास होता है जिसमें ये सौंफ वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है, सेम वे गुड़ है. तो इससे एक तो कंजम्पशन हम कहीं पे भी कर सकते हैं, टिफ़िन में कर सकते हैं. गुड़ की जो 40 रुपये किलो की कॉस्ट है, दैट बिकम्स द 2000 रुपीज़. सो ये एक छोटी सी इनोवेशन ने गुड़ की कॉस्ट को इतना 50 टाइम्स बढ़ा दिया. तो ये एक इनोवेशन, एक इनोवेटिव सोच है. कुछ इनोवेशन, आप इनोवेशन कहें कुछ भी कहें, ये एक कंज्यूमर का बिहेवियर अल्टर करता है. तीसरी बात, पीपल एंड गवर्नमेंट took the tangible step towards environment, society and governance transformation to address the issue related to unhealthy environment and societal choices. अब हम पंजाब में कहीं में भी पैडी के स्ट्रॉ में आग लगा देते हैं, तो you know the Delhi becomes the gas chamber along with the other. This is also one of the contributor along with certain other factors. So, but अब हमारे पास बायोडिग्रेडेबल कटलरी है, अब हमारे पास थर्मल बायोफ्यूल है. एंड इनिशियली 3-4 years बैक इट वाज एट ए पायलट स्टेज कि हम इससे बायो CNG और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट आई एम रियली वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू नाउ ऑल दीज आर एट द कमर्शियल लेवल. So because I was associated since beginning, so it is really very good to see them at the commercial scale. So ये हमारी choices हैं कि हमने जो product, जो agriculture waste था, जिसको manage करना एक menace था, हमने उसको एक valuable
चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हमारे फार्मर्स को एक एडिड इनकम है। मैं पैडी की थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब हम पैडी स्ट्रॉज को कलेक्ट करते हैं तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर को जनरेट करता है, क्योंकि उसकी बेलिंग भी करनी है, उसको फार्मर से कलेक्ट करना है, क्योंकि फार्मर्स को फील्ड तभी खाली चाहिए, वो 10 दिन का ही विंडो होता है। तो दैट्स हाउ इट्स नॉट ओनली दैट यू आर प्रोड्यूसिंग और यू आर रिसाइकलिंग द वेस्ट, बट यू आर क्रिएटिंग the entrepreneurs also. So you are providing their employment also. So each and every initiative is linked towards that. So that's how it is really, really very, very important. And another, the empowering the farmers, जो इस पूरे कहानी का थीम है, उसमें एग्री फिनटेक हैज़ प्लेड ए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम पैसा सभी को चाहिए। ये पूरी कहानी पैसे के बिना नहीं हो सकती, और कहानी हमारी फार्मर्स से शुरू होती है और फार्मर्स के साथ ही ख़त्म होती है। तो जब हम फार्मर्स का क्रेडिट स्कोर इज़ ए मेजर इशू, बट द स्टार्टअप्स आर कमिंग विद दिस सॉल्यूशंस वेयर दे कैन बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट हिस्ट्री दे डू देयर KYCs। और एक मैं वर्ल्ड का एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगी। सो वो आपके गुजरात और महाराष्ट्र में ही ऑपरेटेड है नाउ। That solution is being adopted in the outside countries or US, like US. So जैसे ही वो वेयर हाउस में प्रोड्यूस जमा करता है, उसकी स्लिप से ही उसका KYC होता है। दे हैव द बैंक का collaboration and then they get the loan. So it's a very quickest method that they will get the loan within no time. So that's how these things are empowering to the farmers. So another is, the entire talk is for increasing the operational efficiency through innovations. And now with this new segment, so we are generating the new category of the customers too. क्योंकि जब हम किसी बनाने की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ता है, फिर सर्विसेज देने वाले सेक्टर भी बढ़ते हैं, फिर हमें उस तरीके का मैन पावर भी चाहिए. सो द एंटायर इकोसिस्टम ग्रोज विद वन इनोवेशन. सो इट्स नॉट द इनोवेशन ओनली, इट्स द एंटायर people that who are associated with that, so everybody gets empowered. So that's how we have to work. If this is my last slide. So just to conclude, basically what we have to do, we have to redefining the value chain. We have to leverage the new technologies. We have to have the 1+ suppliers that we have seen in Corona, that everybody's dependence was on China, and once that has been blocked, so everything got blocked, so we don't want to do it again. So we should have the resilient supply chain, as well as the another major point is enhancing the capability of the work power to see real time or near real time, and viewing their performance as well as their risk. So with these words, that we have to have end-to-end operations, we have to just integration from end-to-end and top to bottom, and building our visibility for today and tomorrow. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for such an insightful talk. I would now like to invite Dr. V. Palanimuthu, Director, NIFTEM Thanjavur, to talk about disruptive food technologies, the next big leap in food processing. Sir. Good afternoon. Namaskar to all of you. Why Gujarat is so serious today? Everybody is very pin drop silent, and I don't know whether you are enjoying or not. We are in World Food India 2024. Food is enjoyable commodity. We should all hush ke, no? We should be very happy to be here. Honorable Minister of Agriculture, Farmers Welfare, and many more portfolios, Sri Raghavji Bhai Patel. I think he has come to our stall last time also, NIFTEM Thanjavur. And then we have
another keynote speaker, respected Chief Secretary of Agriculture, Farmers Welfare, Dr. Anju Sharma ji. Then we have Sri D.S. Shah, probably the Managing Director of Gujarat Agriculture Cooperative, Industries Cooperative, Industries, Agro Industries Corporation, Gujarat. Then we have another speaker from ICAR, ADG, ADG IP cell, Dr. Neeru, Bhooshan. Of course, one more speaker is missing. Yeah, thank you very much for inviting me here for this Gujarat session in the World Food India. I'm also part of the organizer of this program, NIFTEM Thanjavur. It is under the Ministry of Food Processing Industries. My job is actually, I wanted to talk some serious stuff about technologies. After seeing the audience, I just wanted to change myself so that to make people little laughter. Okay, that's why. What really we can do in food technology? What are there something which is coming disruptive? What the way we eat food has changed. Everyone understands the way we eat food completely changed in recent years. What is the scenario? See, our food processing sector, I'm not talking about agriculture much because this is World Food India event. I thought it is we have to talk about food processing more. So I just aligned my talk to that level. Food processing sector is one of the key sector in this country. Is probably the 5th key segment of this country, food processing domain. We actually, our output is almost $535 billion in 2025, and our industry share of the this is about employment. How much employment it generates? We have about in the organized food processing sector, we have 20 lakh employees contributed from food processing sector. And in unorganized sector, we are all enjoy the street foods, gobi Manchurian, rolls, other things, everything on the street. We want to enjoy foods. See, this country is very vast. Very vast, so many types of, so many states. So each district has different kinds of food. If you take the unorganized sector, how many people we are engaging in food processing sector is mind-blowing. 50 lakh, 5 million people are employed in unorganized sector. And those people are mostly entrepreneurs. Our PMFE scheme is to bring this 50 lakh unorganized sector people to formal economy. That's what the PMFE scheme, which is running for last 4 years. A lot of Gujarat is doing well. And we are the capacity, national nodal agency for capacity building. We have a very good relation with Gujarat, NIFTEM Thanjavur. Many times people came there for training and all. And there are very key sub-segments in food processing that I just flag it up. Fruits and vegetable processing, because Gujarat is, lot of people are vegetarians. Fruits and vegetable processing is a very key sector in Gujarat, and of course across the country as well. Of course, this apart from that, poultry and meat processing, though you don't like it, but you have a very big coastline. And I think I was just listened over 1,600 kilometers. I have visited those areas where fish processing industries are there, maybe about 10 years back. And you have a tremendous processing industries in fish processing. Gujarat doesn't eat, but it sends across the globe. And that is one of the key sectors. And of course, food, retail and dairy industry. This dairy industry per se came from Gujarat. From Gujarat Milk Cooperative Limited and Amul, the well-known brand, whole world, it came from Gujarat. Gujarat is, we know they are very good entrepreneurs.
This food processing business is basically entrepreneurship. More than the technology, you need that business acumen and skills and entrepreneurial skills. That is what required. Where these opportunities are growing in food processing. These are the 6 important areas I could really perceive. Regional cuisine is really coming up big. So, now I'm from Tamil Nadu. I don't know. I'm sorry, I cannot speak fluent Hindi. I can manage Hindi. I cannot speak very fluent Hindi. That's why I'm speaking in English. Regional cuisine. This is a very big area. I'm telling you, in Bangalore roadside, 5 years back, I have not seen momo. Momo, everybody loves it. It came from Nepal and eastern part of our India, northeast and all. Now, every small street has a momo vendor in the evening. That means regional things, Dokla. I have never tasted dokla except in Gujarati houses. I have a lot of Gujarati friends. Many people are university people. 2-3 people are Agriculture University Vice Chancellors from Gujarat. Dr. N.C. Patel, Dr. D.C. Joshi. All these people are my batchmates, though they are seniors in IIT Kharagpur. Now, I have a lot of friends. Now, this dokla I never seen before. Unless I went to their house, I frequently go to their house. They are very good hosts also. They serve, this dokla, my wife also now makes dokla. That is why I am telling this. Regional food has its own characteristics. Idli is a world global food, though it came from down south. Idli is a global food. Dosa is a global food. Like that, if you really record all the products in India, I am sure you will get at least some 5 to 10,000 of products which can be taken globally. Local foods you can take it to global level. You don't get katti roll. Calcutta katti roll is so famous. Like that, regional cuisine, there is a very big expanding market. You can encash it on it. There are many entrepreneurs here. These are all indigenous foods, not known globally. Globally, very, global food, they say continental food, that food, this food. I also often stay in 5-star hotels. Those foods are very bland. Curd rice is the best thing in 5-star hotels. No, that's what I eat. I left non-vegetarian. So for last 5 years, except curd rice, I don't like anything. We need some masala to hona chahiye life mein. That kind of a food you offer from India, it has to be taken. Samosa, you get excellent samosa in Canada, in United States or in UK. How it is possible? Some entrepreneurial, our Sardarjis, these madams, they are idle at home. They started a small business. And even some Gujaratis. I took in Montreal, this samosa from a Gujarati shop only. $1, I think 3 samosa they give. I don't remember, $2 or $1, Canadian dollar, some few years back. Excellent samosas, better than what we produce in India. They produce. So this is they are taking. Then next one is online delivery. E-commerce. It has, and who has not eaten from Zomato, Swiggy? During the finals of T20 World Cup, our population is 1.4 billion, that is 140 crores. And that particular night, nearly 6, slightly the figure may be wrong, but it gives the message. There were about 60 crore orders in this country during that night. That means online delivery has taken tremendously. You can you can open an app and then you can supply your own food in your area. It's possible. Bangalore, from each apartment, some people, entrepreneuring people, they just put, these are the items we are preparing at our home. Anybody wants, you are just give an order. All on phone. It is delivered. They can take it from their home. This is possible. And then healthy snacks. People say junk foods, our children are eating, young people are eating.
See, I'm given 15 minutes time. I don't know whether I can exceed some few minutes because I have very beautiful slides and how much people will enjoy. See, healthy snacks, you take chips, aloo chips. Now that chips, when you take from roadside, that if you take 100 gram chips, 40 to 42 grams is oil inside the chips. You want to eat healthy food. That means you have to cut down fat. But the chips is so nice to eat. You are eating 100 gram chips, 42 gram oil. That is the problem. It's not healthy. It's not healthy. There are several things. No, you can high sugar, high sodium. I will come little bit later. We people want healthy snacks. The industry is moving towards that side. Then natural ingredients and additives. No, Gujaratis are very fond of these ice creams. Vadilal, Jyoti, Amal, all kinds of ice creams. These ice creams, the ingredients of, if you see, it's a vanilla. Vanilla's flavor comes from where? It does not come from vanilla bean. It is not extract. That is, if you put it, the ice cream will go to three times or 2 times. They will put all artificial flavors, flavors for this ice cream. Now people want a natural ingredient, natural products. You want now custard apple ice cream. Why it is coming big? Because people want healthy food and then natural food. We do not know these artificial things, what it causes. Number of cancers are increasing every day because of many ingredients which are added there, preservatives and other ingredients added there. So we are going towards that. And digitization at all consumption level. Digitization in the sense, this is, I have a very detailed slide later. I will come back to you. Digitization in the sense, you want to go and buy just coriander leaves, one small bunch. Are you paying with cash? No. All just Phone Pay, Paytm, or Google Pay. So the things have changed in India and business will change in India. Almost now 60% of the transaction, 65% I was told, is the transaction in a digital form. There are many more things in digitization. And then blockchain concept. Now you manufacture certain food. You need, if you take an industry, suppose, let us take one machine, a packaging machine is made. Gujarat is very good at making machinery, food processing machinery. Let me see whether in some slides I will come back to that. No, this blockchain concept, you make, motor is made from somewhere. And the fan is made from somewhere. A printing head is made somewhere. This is all combined and a few components are made in that industry, combine it and then sell it as one full machine. Same thing happens with the food product also. You take different ingredients. Spice comes from Kerala, pepper comes from Kerala, and you take some other ingredients from Tamil Nadu, another ingredient from Meghalaya, something like that. You make a food product and for export. But this blockchain concept, this inventory becomes less. In this block, you score and you can track where from it is coming, how it is coming, when it was produced. All things can be tracked in this blockchain concept. This is changing this food technology. I'll just flag for the audience because there are some industrialists. There are 13 trends which are disrupting in this food processing business. The first, this thing is focus on whole grains. Processed foods, we are eating atta for a long time. Till this Asirvad and Annapurna, all this atta came in, we took gehu, we produced, went to Girini mill, milled it, brought it, that is what was healthy. Now the things, I'm not only talking about wheat flour, there are many flours. Those things have gone. Maida usage increased. Bakery products increased. Bakery mostly uses maida. It's not that healthy. But we are coming back to our old grains. Millets. There are many lentils in the dals. Many dals. Okay. I have how much time? Another? Huh? Okay. Thank you.
Now, 15 minutes is very difficult to talk technically. These whole grains are coming back. Some of the rice varieties which we have, the black rice. Black rice, only the kings were using it. Kings, black county, that Tamil Nadu, that Assam. These grains are coming back. Many products are made using this. That trend is going towards that. Using whole grains and the healthy millets. Now, we never heard about quinoa. It came from Peru. And these things are coming back, into our product. And then we have second thing I want to flag is healthy formulation. Now, since the consumers are health conscious, low salt, low sugar, low fat diets are, any product you make, you have to put it in the label. If you really print it, this contains low salt, low sugar, that really picking up in the market. Some of the industry people, you can produce such products, fiber enriched product or micronutrient enriched product, high protein product, because we are deficient of enough protein. Maybe Gujarat may not be that much, but in the index, malnutrition index, Gujarat lags at the bottom somewhere, maybe 1 to 5 level only. Even though you can afford, but malnutrition is very high in Gujarat. It is surprising. That is the data it shows. You have to, these kinds of products will pick up in the market. Protein enriched foods, then probiotic foods. Now, Yakult, the small cup, if you have a dysentery and other things, that, if you take any antibiotic for a fever, or you have to take some curd to increase your gut health. Yakult is a small product, small cup, which revolutionized that probiotic culture. You can now, many probiotic products are from fruit-based. Actually, fruit and dairy was not mixed earlier. Now, fruit-based products are, probiotic foods are available because some people don't lactose intolerant. Milk they cannot take. So that kind of a probiotic products are coming. Many fermented foods which are coming to the market because of its goodness. There are many novel food sources. Sources in the sense, how many of you drumstick leaves, these drumstick leaves, some 10 years back, only in local, in the rural areas we were eating. Now, it is one of the top brands, products available in the US market is drumstick leaf powders. So expensive. These things are coming into the market. These are all new ingredients. I told you millets. There are new ingredients which are coming into the market, which are age old, but known to people, known to public, but known to industry. They are coming back. Poorly recognized ingredients are coming back. And you may like it or not like it. Insect proteins are coming in a big way. Insect proteins. Insects, if you are a vegetarian, don't worry. But the market is growing very big. Some of the countries have now recognized these are all safe. And India also is coming up with insect proteins, seaweeds. Gujarat coast is having seaweeds. Lot of products are made using seaweeds. This is another industry, microalgae, microbial food. These are all coming up. These are another area. Plant-based foods. Mainly, people want an alternative to meat. They want to cut down meat consumption. What is the alternative? Plant-based protein is an alternative. How to make, but we want similar to the texture of the meat. How to make it? That is an industry which is growing. Soya chunks is one good thing. But still, a lot of research is going on this area. There's an analog, similar analog. It should just look like a same thing. Even rice. Rice, we are producing rice not from the plant. We are making rice in the factory with ingredients which are nutritious. That's called analog. We are mimicking many conventional products, Neeru products. Then flavor trends. Now the flavor in the strengths, how to extract some of the flavors from natural plants, natural ingredients. That is the another area which is growing. And then these flavors should be released in a controlled manner when we consume foods. There is an area which is growing. Many industries can produce products in that area.
and the encapsulation of many of the flavor components. This is an area where industry can pick up. Organic foods, I don't want to tell more because you have already, some speakers spoke about organics. In Gujarat, some district is organic district. Entire northeast like Sikkim, I think Meghalaya, they're all become organic states. All products produced in agriculture system is all organic. People want organic. Only thing is they are not sure whether it is organic or not. Some that certification, another thing. This is the good another area. Then food sustainable. Any processing, it should be sustainable. Not only the new processing industry should look into minimizing the waste. Because if you process a mango, if you lose many, and if the kernel, nearly about 30-40%, kernel and other things, then your economy, the economy comes down. Not in the, your company economy is coming down. If you use that mango kernel, extract the oil, extract some of the component, it will grow. That means everything should be used within the industry. Downstream industries should be required. And you should consume less. Food processing is an energy guzzler. Lot of energy is required. Heat is required. So you have to reduce that energy component, carbon footprint. This is another area. Low consumption of energy is another area. Of course, we have to conserve resources. There are waste valorization. I was just talking about just mango. There are many ways which has to be upcycled. See, you extract tomato puree or ketchup. You are wasting that pumice, that the skin. It contains lycopene, which is again a very good antioxidant that can be used in many medicine, nutraceuticals. That can be done. You have to upcycle the waste and other material. Resource recovery. See, some 20-25 years back, whatever you produced in the dairy industry, where was going waste? That buttermilk. From that, somebody got an idea, you can extract that protein, that whey protein. That is the topmost in any Horlicks or Boost or anything you drink. The whey protein is the major component, which is once upon a time it was a waste. You can really you can recover many of these components during processing. Minimal and non-thermal processing, this is a new area of research and in the industry is going towards that. Because many times when you heat it, many nutrients are lost. That can be retained using minimal processing. Okay, I know 1 minute. That is, this minimally processed and as well as non-thermally processed, nutrient contents are retained. You visit our NIFTEM stalls, you will find many of these items there. And of course, the functional foods, all those things are there. This computer and information technology, already some speakers spoke, artificial intelligence, robotics and machine learning. Any fruit sorting, whether this fruit is of this, which grade, how it is sorted, is all artificial intelligence is playing a big role. And of course, this machine learning, AI are related. Robotics, now no more labor force to really sorting, doing many work. Robotics is coming up in big way in food processing industry. This is one area I'm just flagging. We are moving towards lab-grown meat. Meat is no longer a product from animal. Directly you can grow in a lab. And these vegetarians can shed their thinking about this is non-vegetarian. You can grow meat in the lab itself, right? Alternatives, and there are many things. 3D printing. If you suppose you want your product, a cake to be printed like your girlfriend, you can do 3D printing. Whatever, you can print even the building. That is coming up big, and we have done lot of work. And of course, specialized nutrition. Suppose his health, this person's health is, we want a product like this. So he is allergic to this, he is allergic to that, he cannot take salt, he cannot take more sugar. You can design a product for that particular person only. That is coming up in big way.
And the food packaging, this is revolutionized the way food is sold in the supermarket. This is a smart and intelligent packaging. Packaging itself will say whether when it is produced, whether it is eatable or not. The color will change. It will give you the indication, don't eat it. It will say. That kind of innovations have come. There are many eco-friendly alternatives have come. No plastics. No eco-friendly alternatives come. And there are many other areas. I think the time is not there. This is probably the last slide. And of course, if you want anything during question hours, you ask me about NIFTEM. We have a wonderful institute. In fact, the last time, our own this minister, he came to our stall. He wanted one NIFTEM in Gujarat. I made one DPR submitted to our ministry, 2 NIFTEMs in some place, one in Gujarat also. No, we are a wonderful institute, and I don't have really time. We really give a very good incubation service, and we develop a lot of technology. Visit hall number 14 and B30. We have a very beautiful pavilion, NIFTEM pavilion. You can see there. I don't have time. And we have NEABL accredited lab, FSSI reference lab. Many things you can learn from there. You can send also people to that institute for good training. Thank you very much for inviting me. Thank you so much, sir, for such an engaging talk. As we are getting closer to 13:30, it's been an enlightening more than an hour or so for the Gujarat session. I would like to invite on stage Mr. Vipul Mittal, Managing Director, National Cooperative Organics Limited, for a quick glimpse on the topic, building high-quality global supply chains for organic and natural farming products. Sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने का, और समय की गरिमा को देखते हुए मैं थोड़ा संक्षेप में आज बात करूंगा. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपनी इस नई संस्था के बारे में बता पा रहा हूँ. इसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड. ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल से मार्च 2023 में गठित हुई है, और ये एक बहुत ही यंग ऑर्गेनाइजेशन है. मुझे केवल करीब 3.5 महीने हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हुए, बट इसके पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे. और ये जो नीचे 5 संस्थाएं दिखाई गई हैं, ये हमारे प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन है. तो NDDB, गुजरात कोऑपरेटिव, नाफेड, NCCF और NCDC हमारे प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन हैं. NDDB हमारे एंकर ऑर्गेनाइजेशन है. सो हमारा जो विजन है वो है हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, और मिशन है सहकार से समृद्धि. और आप जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये चारों जो बिंदु हैं उन पे टिक होता है कि ऑर्गेनिक हमारी सॉइल के लिए अच्छा है, और सॉइल के लिए अच्छा है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ऑर्गेनिक जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा है, वो सेफ़ है, वो हमारे किसानों के लिए अच्छा है क्योंकि उनकी भी सेहत का ख्याल रखता है, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है बिकॉज ऑफ ऑल दी फैक्टर्स जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में. तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने बेसिकली सबसे पहले मार्केट के साइड में देखा है और एक ब्रांड बनाया है भारत ऑर्गेनिक. तो भारत ऑर्गेनिक जो ब्रांड है ये एक अपने आप में एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को साथ में लेके आ रहा है. और ये हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं सीमित रूप से दिल्ली में. हमारे सफल के नेटवर्क है करीब 300 आउटलेट्स का, और मदर डेयरी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके थ्रू हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसी श्रृंखला में लॉन्च किए जाएंगे. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका गठन क्यों हुआ, चैलेंजेस क्या हैं हमारी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के, तो आज अगर आप मेरे से समझें तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के जो 2 छोर हैं, यानी कि किसान और कंज्यूमर, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब जो है इस इंडस्ट्री में किसी ना किसी रूप में लाभान्वित हो रहे हैं. अब ये मेरी तरफ से एक थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगेगा आपको, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंज्यूमर जो है एक बहुत बड़ा प्रीमियम पे कर रहा है ऑर्गेनिक के लिए, और किसान को जो है वो प्रीमियम मिल नहीं रहा है. तो इस बात का मेरा तात्पर्य यह है कि जो बीच के कड़ी है, यानी कि जो कमीशंस हैं रिटेलर्स के, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, जो टेस्टिंग लैब्स हैं, इन सब पे पैसा खर्च हो जा रहा है, और ना तो किसान को मिल पा रहा है और ना कंज्यूमर को मिल पा रहा है. तो अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए खुलने वाला है ऑर्गेनिक में, और वो मैं आगे आपको आंकड़ों के साथ में समझाऊंगा. ये अब आप देखिए, ये ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है. तो हिंदुस्तान में दुनिया के 55% ऑर्गेनिक किसान रहते हैं, और औसत में हमारे किसानों की जो ज़मीन है वो 1.8 हेक्टेयर्स है,
जबकि दुनिया में जो वो ज़मीन है वो करीब 21 हेक्टेयर है। तो ये लाजमी सी बात है, और हम सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, छोटे किसान हैं, तो यहाँ के सॉल्यूशन भी थोड़े डिफरेंट हमें देखने पड़ेंगे। तो एकरेज की अगर हम बात करें तो दुनिया में करीब 96 मिलियन हेक्टेयर्स की भूमि ऑर्गेनिक है, परंतु उसमें 3/4 जो है उसमें वो पैस्चर लैंड है, जिसपे कि जानवर चारागाह की तरह उसको यूज़ करते हैं। तो उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हमारी ज़मीनों से, जो कि भोजन उगाती है। तो अगर उस तरह से हम देखेंगे तो दुनिया की 20% ऑर्गेनिक ज़मीन आज हिंदुस्तान में है। इसको एक और आंकड़े से समझेंगे कि औसत में 2% भूमि वर्ल्ड की ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुकी है। हिंदुस्तान में वो प्रतिशत 3.2 है। सो 3.2% ऑफ आवर कल्टिवेबल लैंड इज ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एंड 20% ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनिक लैंड इज इन इंडिया। पर उसके बावजूद आप देखेंगे, मजे की बात यह है कि आप लास्ट नीचे से अभी देखेंगे स्लाइड को, तो तकरीबन 134 बिलियन यूरो का व्यापार होता है दुनिया भर में ऑर्गेनिक के नाम पे, जिसमें 50% लगभग यूएस में होता है और दूसरा 40% लगभग यूरोप में होता है। तो 90% बाजार जो है वो सिर्फ यूरोप और यूएस के बीच में है ऑर्गेनिक का, जबकि पॉपुलेशन कहाँ है? हिंदुस्तान में है। सारी दुनिया हिंदुस्तान के बाजार को की तरफ देख रही है, उसमें आना चाहती है, और हमारे पास इतना बड़ा बाजार है ऑर्गेनिक का जो कि हम अनलॉक कर सकते हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ये सोच समझ के भारत सरकार ने और सहकारिता के रूप में इस संस्था का गठन किया है, और हमारा उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से ऑर्गेनिक को अफोर्डेबल और ऑथेंटिक बनाएं, जिससे कि एक तरफ मार्केट में डिमांड बढ़े और उसके चलते अगर किसान को सही मूल्य मिलेगा तो उसको एक मोटिवेशन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये तो बेसिक हमारा ये हमारा बेसिक अप्रोच है। तो मार्केट की साइड में हम क्या करेंगे कि हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डायरेक्ट किसानों से जुड़ के उनसे लेंगे और उसको सभी माध्यम से D2C, B2C, B2B सभी माध्यम से मार्केट में पहुंचाएंगे, जिससे हम जल्दी से जल्दी वॉल्यूम्स एकत्रित कर सकें, जिससे कि हम किसानों से ज़्यादा सामान उनका ऑर्गेनिक फॉर्मेट में ले सकें। सो ये हमारी मार्केट साइड की स्ट्रैटेजी है। और मैं अपनी आखिरी स्लाइड पे आता हूँ, ये हमारी प्रोडक्शन साइड की स्ट्रैटेजी है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। तो हमने बेसिकली सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में हमें जो डायरेक्शन है और हम जो देख पा रहे हैं, जो एक रियलिटी है इंडिया की, छोटे किसान हैं, मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, मल्टीपल इकोनॉमिक स्ट्राटा के कंज्यूमर्स हैं, तो इनको जोड़ने के लिए जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उनको सहकारिता मंत्रालय पैक्स के रूप में तब्दील कर रहा है। यानी कि पैक्स को बहुत सारे कामों के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल और इंडिपेंडेंट बन सकें। और हमारे लिए भी ऑर्गेनिक में पैक्स विल बिकम द फल्क्रम ऑफ आवर ऑर्गेनिक इनिशिएटिव। तो पैक्स जो हैं वो ना केवल ऑर्गेनिक ग्रुप्स का गठन कर सकती है फ्यूचर में, पर आज जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके सामान को पैक्स प्रोक्योर कर सकती है, स्टोर कर सकती है, पैक कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, और भारत ऑर्गेनिक के ब्रांड में NCOL के द्वारा मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। तो ये हमारी एक रूपरेखा है NCOL की, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा एक स्ट्रैटेजी हम लोग कर रहे हैं कि हम सभी राज्य सरकारों के साथ में MOU साइन कर रहे हैं, जिससे कि राज्य में के जो इनिशिएटिव्स ऑर्गेनिक की तरफ लिए गए हैं अभी तक, उनसे हम साझा हो सकें और उनको जल्दी से जल्दी मार्केट प्रोवाइड कर सकें। मुझे बड़ी खुशी है बताने में आपको कि अभी अभी हमने मेघालय के साथ में MOU साइन किया। डॉक्टर आशीष भूटानी सेक्रेटरी कोऑपरेशन वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, हमारे डॉक्टर मिनेश शाह जो चेयरमैन NDDB हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे, और इसीलिए मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ इस कार्यक्रम में आने के लिए। सो उसके चलते अब हम 5 राज्यों के साथ में ये गठबंधन कर चुके हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में हमारे देश के जो किसान हैं, ऑर्गेनिक किसान हैं, उनको हम मार्केट के साथ में जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. I would now like to request Shri S.J. Solanki, Director of Agriculture, for a formal vote of thanks, please, sir. नमस्ते। वर्ल्ड फूड इंडिया 2020-24 एडिशन में गुजरात स्टेट के नॉलेज सेशन में उपस्थित हमारे राज्य के माननीय कृषि मंत्री श्री राघव पटेल साहब का मैं
धन्यवाद करता हूं कि साहब ने हमारे इस सेशन में आके चीफ गेस्ट की तरह और हमें संबोधित किया और हमें मार्गदर्शित किया। तो आपका धन्यवाद सर। ऐसे ही हमारे गुजरात राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिक मुख्य सचिव श्री डॉक्टर अंजू शर्मा मैडम का भी मैं खूब आभारी हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छे से इंसाइट्स हमारे सामने गुजरात स्टेट के हिसाब से दिए। तो मैडम आपका भी शुक्रिया। जिस ये हम इकट्ठे हुए उस प्लेटफॉर्म को हमारे एमडी गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और इंडेक्स ए शाह साहब का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने भी स्टार्ट में ये पूरा सेशन स्टार्ट करने के लिए जो हमें मार्गदर्शन किया उसके लिए खूब आभारी हूँ शाह साहब। और तीनों एस्टीम हमारे स्पीकर्स जिन्होंने बहुत सारे इंसाइट्स अपने अपने टॉपिक को दिए और हमें अच्छी तरह से जानकारी दी। तो इसी तीनों एस्टीम स्पीकर्स का मैं खूब थैंकफुल हूँ कि आपने यहाँ आके अपना अच्छी तरह से नॉलेज शेयर किया। और सबसे बढ़िया जो आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे जो सेशन है उसको सही अर्थ में उसको सही किया, तो इसके लिए आप सबका भी आभारी हूँ। और आओ साथ मिलके गुजरात के हिसाब से जो एक फूड इंडस्ट्री की बास्केट है उसको हम लाभान्वित करें। धन्यवाद। Thank you so much. It has been amazing afternoon. I would like to thank you all for joining us. We mark closing of the session. Thank you very much, dignitaries, for sparing time and being with us. Thank you very much. Our Gujarat Pavilion is at Hangar 1, B02. Please do visit the same. Thank you.